हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का फिर से बहुत स्वागत है। वील कंटिन्यू विथ सेट 5 important MCQs and today we will be starting with a new lesson actually, Romeo and Juliet. Okay, though I have not completed Romeo and Juliet, I will be completing Romeo and Juliet in the next set. Okay, so let us start. Alright, so there are altogether of around 19 MCQs, and all the MCQs are very important. I have covered all the important questions as MCQs. Choose the correct answers. Okay, please go on participating as I read the questions and the options for all of you. Okay, so let us start. Name the two chief families in Verona. तो दो मेन फैमिलीज वेरोना में कौन कौन है और कौन सा है? Is it Capulets or Montagues? Is it families of Verona and Montagues? Is it families of Tybalt and Friar Lawrence? तो हम सब लोगों को पता है that the two chief families in Verona are Capulets and Montagues. Okay. What was there between the two families? दोनों families के बीच में क्या था? A. Extreme love. So there was extreme love between the two families. Option B. A very long dispute. Dispute matlab quarrel. The meaning of dispute is quarrel. There was a long dispute or a long quarrel between the two families, or there was true friendship between the two families. Which one do you think is correct? Yes, come on. The correct answer is option B. Long dispute, long quarrel between the two families. Even the servants also used to quarrel when they would be on the streets. When they would encounter one another on the streets, they would pick a fight. Anyways, number 3. What kind of disturbance did the quarrel between the families create? The disturbance, okay, disturb the happy quiet Verona streets. Okay, so दो families के बीच जब quarrel होता था तो उनका quarrel किस type का disturbance create करता था? What kind of disturbance did the quarrel between the two families create? Did it disturb the happy quiet Verona streets? Did it disturb the sleeping people of Verona, people who used to sleep at night or in the afternoon, okay, taking a nap? So their quarrels would disturb these sleeping people. Is it like that? Or number C, did it disturb the poor street animals? So which one do you think is the correct answer? Obviously we all know that there is no mention of poor street animals, there is no mention of sleeping people. The correct answer is disturb the happy quiet Verona streets. Okay, just go on ticking the answers. Alright, number 4. Who threw a big supper party? तो किसने बहुत बड़ा सपर पार्टी जो है थ्रो किया था? इज इट लॉर्ड मोंटेग, इज इट द प्रिंस ऑफ वेरोना, इज इट लॉर्ड कैपुलेट? कौन सा है? अब प्रिंस ऑफ वेरोना तो ऑब्वियसली इट इज़ एन इनकरेक्ट आंसर, ये तो इनकरेक्ट आंसर है। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है लॉर्ड मोंटेग और लॉर्ड कैपुलेट में। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, इन द होल स्टोरी लॉर्ड मोंटेग इज मेंशन्ड ओनली एट द एंड, दैट टू इट इज़ नॉट अ मेंशन, बट व्हेन Romeo, Juliet, Tybalt, Mercutio, Count Paris, after they die, the Prince of Verona actually comes and scolds the two families. Okay, दोनों फैमिलियों को वो गाली देता है, scolds the two families that because of your enmity only you have lost so many children. Okay, so Lord Montague appears at the end with his wife. So Lord Montague is nowhere to be seen. It is Lord Capulet who has a very small scene in the story. Okay, so Lord Capulet threw a big supper party. ठीक है, let's move on then. Have you tick marked? Okay, you can pause also and tick mark. Let us move on then. Number 5. Who were invited to the party of the Capulets? पार्टी में कौन कौन invited थे? Capulets के पार्टी में कौन कौन invited थे? Is it the Prince of Verona? Could be. Many fair ladies and noble guests. तो बहुत सुंदर लड़कियाँ और बहुत distinguished, educated, noble guests were invited. और the Montagues were invited. क्या लगता है आपको? देखिए, Montagues तो cannot be invited. Montagues cannot be invited because Montagues and Capulets are enemies. So this answer is already wrong. Prince of Verona he is the prince now. He will never come to the party of common people, obviously. So what is left is many fair ladies and noble guests were invited to the party of the Capulets. ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है. Who was Romeo's first lover? Is it Juliet? Is it Rosalind? Is it Elaine? कौन सा लगता है आपको? Which one do you think is correct? Elaine is incorrect. Elaine is from the story, from the play, not story exactly, from the play 14. Right? Daughter of Mrs. Pringle. She is the daughter of
Mrs. Pringle from the play 14. So this is incorrect answer. Now there are two options, Juliet and Rosalind, and this can again confuse you, but there is no need for confusion because Rosalind is her first love. ठीक है, तो Rosalind is her first love. All right. Number 7. Who suggested Romeo to go to the party? Is it Benvolio? Is it Mercutio? Or is it Tybalt? आपका कौन सा लगता है? Is it Benvolio? Is it Mercutio? Or is it Tybalt? Who suggested Romeo to go to the party? Come on. Tybalt is the enemy of Romeo, so he cannot be correct. Mercutio did not go with Romeo to the party. Who went to the party with Romeo? It was Benvolio. So Benvolio actually suggested Romeo to go to the party. Benvolio ने suggest किया था Romeo को, advise किया था Romeo को to go to the party. अब क्यों suggest किया था? That we will learn in the next page. Let us move on then. Romeo went to the party in the disguise of a रोमियो एक्चुअली अपने आप को छुपा के गया था बिकॉज मोन्टेग्स वेयर नॉट अलाउड इन द पार्टी ऑफ द कैपुलेट्स. मोन्टेग्स लोग तो अलाउड नहीं थे, मोन्टेग फैमिली तो अलाउड नहीं था, तो इसलिए रोमियो जो है वो चेहरा छुपा के गया था, अपना चेहरा या हुलिया छुपा के गया था अपना. ठीक है, तो किस तरीके से छुपाया था? हाउ डिड ही डिस्गाइज हिमसेल्फ? डिड ही वेयर किंग्स ड्रेस एंड डिस्गाइज हिमसेल्फ? डिड ही वेयर अ मास्क एंड डिस्गाइज हिमसेल्फ? और डिड ही वेयर द ड्रेस ऑफ अ पोर्टर? और डिड ही बिकम अ पोर्टर एंड गो देयर? विच वन डू यू फील? बहुत ईजी है. द आंसर इज बी, मास्क. वो मास्क पहन के गया था इन द पार्टी. ओके, इन द डिस्गाइज ऑफ अ मास्क. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. वाई डिड बेनवोलियो सजेस्ट रोमियो टू गो टू द पार्टी? अब ये क्वेश्चन आएगा कि वाई डिड बेनवोलियो सजेस्ट रोमियो टू गो टू द पार्टी? बेनवोलियो ने रोमियो को क्यों सजेस्ट किया पार्टी में जाने के लिए? बिकॉज ही वांटेड रोमियो टू मैरी जूलियट. बिकॉज ही यहाँ पे बेनवोलियो. ओके, ही इज बेनवोलियो. He refers to Benvolio. All the he's refers to Benvolio. Because he wanted the two families to reconcile. ये जो Montague और Capulet में झगड़ा है, the dispute, the quarrel that is between the two families, Benvolio wanted this quarrel to end and he wanted the two families to become friends again. So reconcile मतलब फिर से एक हो जाना. Okay, to come together again. So he wanted the two families to reconcile. और इज इट नंबर सी, बिकॉज ही विश टू क्योर हिज फ्रेंड ऑफ हिज लव फॉर रोजलिन? तो आंसर बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है. द आंसर इज टू ईजी एक्चुअली. विच वन डू यू थिंक? करेक्ट आंसर इज नंबर सी, बिकॉज ही विश्ड टू क्योर हिज फ्रेंड ऑफ हिज लव फॉर रोजलिन. क्योंकि रोमियो जो है, रोमियो लव्ड रोजलिन वेरी मच इनिशियली इन द बिगिनिंग, बट देन रोजलिन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रोमियो. So Benvolio wanted Romeo to go to the party because many beautiful ladies will come to the party. So Benvolio wanted Romeo to look at those other ladies and compare Rosalind with their beauty. And Benvolio felt that when Romeo will see other ladies in the party, Romeo will forget Rosalind instantly. Okay. So he wished to cure his friend of his love for Rosalind. Okay. Number 10. When was Romeo struck by the beauty of Juliet? तो Romeo ने Juliet को जब देखा तो what was Juliet doing when Romeo saw her and felt that this girl was very beautiful? So struck by the beauty of Juliet. When? What was that situation? When she is Juliet here. When she was eating, when Juliet was eating, at that time Romeo saw and instantly he was struck by the beauty. Or is it when she was dancing, or is it when Juliet was talking? When she was talking. आपको कौन सा लगता है सही है? Is it A, B or C? कब रोमियो ने जूलियट को देखा and Romeo started feeling that this girl is very beautiful? So what was Juliet doing at that time when Romeo saw her? Correct answer is number B, when she was dancing. So actually Juliet was dancing when Romeo saw her and felt that, and he was actually struck by her beauty. वो Juliet को इतने beautiful, such a beautiful girl like Juliet, when he saw for the first time, he was struck by beauty of Juliet. Okay, let us move on to the next page then. Number 11, just few more to go. When Romeo was uttering praises for Juliet, who overheard this? तो Romeo जो है Juliet की तारीफ कर रहा था. Actually he was praising Juliet. Okay, and somebody heard from behind. किसी ने दूर से सुन लिया. तो वो कौन था? Who heard Romeo praising Juliet? कौन था वो जिसने सुन लिया था? Is it Tybalt?
इज इट लॉर्ड कैपुलेट, इज इट काउंट पेरिस? अब काउंट पेरिस, तो दिस आंसर इज इनकरेक्ट बिकॉज काउंट पेरिस appears at the end of the story. So is it Tybalt or Lord Capulet? Now both are quite near, बहुत आसपास वाला आंसर है, okay, very near to the answer. Which one do you feel? If your answer is Lord Capulet, then you're wrong. Okay, Tybalt is the correct answer. Tybalt overheard Romeo when he was praising Juliet. तो Tybalt ने सुन लिया था, ठीक है? All right. Who did not allow Tybalt to take any action? So Tybalt was very angry at that time that how dare a Montague entered the party. So Tybalt was very angry and he wanted to beat Romeo there itself, but somebody stopped him. किसी ने उसको रोक लिया, ये कहा कि don't spoil the party because many important guests have come to the party and don't create a scene here. यहाँ पे जो है scene create मत करो, हम लोग बाद में देख लेंगे. We will take action later, not now. Okay, so who actually stopped Tybalt from taking any action? Is it Lady Capulet? Is it Lord Capulet? Or is it the guests? Which one do you think is the correct answer? If your answer is number B, Lord Capulet, you're absolutely correct. Lord Capulet stopped Tybalt to take any action. Lord Capulet ने कहा कि this is not the time to take action. We will take the action later because many important guests have come to the party. So do not spoil the party. Number 13. Did Romeo know in the beginning that Juliet was a Capulet? अब यहाँ पे मैंने दो ही ऑप्शन रखा. I've kept two options because he knew, he did not know. This two answers only can be there. Okay. So क्या रोमियो को पता था that Juliet was a Capulet in the beginning? Did Romeo know that Juliet was a Capulet? तो आंसर A, he knew already, उसको already पता था. And option B, he did not know. Romeo did not know that Juliet was from the Capulet family. कौन सा आपको लगता है, उसको पहले से पता था या उसको नहीं पता था? Did he know or did he not know? कौन सा लगता है आपको सही है? Number B, he did not know. Romeo did not know that Juliet was from the Capulet family. He had just seen the girl and was struck by her beauty and he fell in love with her. That's it. But he did not know that Juliet was from the Capulet family. But later he came to know that Juliet is from the Capulet family, from his enemy family. Okay. तो नंबर 14 आप देखिए कि व्हाट डिड रोमियो डिसाइड आफ्टर नोइंग दैट जूलियट वाज अ कैपुलेट. जब रोमियो को पता चला, व्हेन रोमियो केम टू नो दैट जूलियट वाज अ कैपुलेट, तो रोमियो ने क्या डिसाइड किया? व्हाट डिड रोमियो डिसाइड आफ्टर नोइंग दैट जूलियट वाज अ कैपुलेट? ही स्टिल लव्ड जूलियट, ही लेफ्ट जूलियट, ही क्राइड. तो वो अपना लव जो है उसने कंटिन्यू रखा. ही कंटिन्यू टू लव जूलियट, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, उसने जूलियट को छोड़ दिया, ही लेफ्ट जूलियट. और ऑप्शन सी, ही स्टार्टेड क्राइंग. विच वन डू यू फील इज द करेक्ट आंसर? We know the answer already. He still loves Juliet because the ending of the story takes us there only, where this is quite evident. This option is quite evident. He still loves Juliet. Otherwise, तो कहानी तो वही पे खत्म. The story would have ended there only, right? So he left. He still loved Juliet. Okay. So these are your answers. Please tick mark all the answers. No need to tick mark. You can just write down the question and the answer only. Okay. Just write down the question and the correct answer. Write down the question and the correct answer. Okay. Alright, let's move on then. We just have few more numbers left. What did Romeo do in the midnight? Number 15. Romeo ने midnight में क्या किया? He slept thinking about Juliet. वो Juliet के बारे में सोच सोच के सो गया. He dreamt of Juliet. उसने रात को Juliet का सपना देखा. Okay, and option C, he leaped the wall and reached Juliet's house. वो दीवार फांद के जो है Juliet के घर पे पहुंच गया. कौन सा सही लगता है आपको? ये भी बहुत easy है, बहुत ज़्यादा easy है ये. कौन सा लगता है, ए, बी और सी? नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ही लीप्ड द वॉल एंड रीच्ड जूलियट्स हाउस. वो मिडनाइट को फिर से घर के बाहर निकला और वो जूलियट के घर पे गए ये कंफर्म करने के लिए कि वेदर जूलियट ऑल्सो लव्स हिम और नॉट. टू कंफर्म. ओके, इज इट अ वन साइडेड लव और अ बोथ साइडेड लव? ओके. 16. डिनाई दाई फादर एंड रिफ्यूज दाई फिल इन द ब्लैंक्स. क्या होना चाहिए इस ब्लैंक में? व्हाट शुड बी इन द ब्लैंक? इज इट नेम? Is it mother? Is it family? Deny thy father and refuse thy name. These lines are spoken by Juliet. Juliet जो है रोमियो को कह रहा था कि you deny your father's name and refuse thy. कौन सा लगता है आपको? Name is the correct option. Refuse thy name. Okay, it is not mother, it is not family, it is name. Refuse thy name. ठीक है. Number 17. While Romeo and Juliet were talking, who called Juliet? जब रोमियो और जूलियट जो है उसके घर पे वो दोनों बातें कर रहे थे. ओके, इन दैट बैल्कनी. ओके, दे वर टॉकिंग टू वन अनदर. हु कॉल्ड जूलियट? वाज इट जूलियट्स मदर?
was it her nurse or was it her servant? क्या वो उसकी मम्मी थी या एक नर्स थी या सर्वेंट थी? ये एक बार एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी. This has already come in the exam. Okay, in set 6 I will bring the exam question papers also, I mean exam MCQs also. I have not included exam MCQs here. मैंने SSLC वाले MCQs यहाँ पे ऐड नहीं किया, बट ये एक बार आ चुका है. This has come once. I don't remember the year. तो सही आंसर है nurse. Okay, a nurse had come to call Juliet when Romeo and Juliet were talking. Okay, and Juliet went away. It was almost morning time. Morning होने वाला था, टाइम था थोड़ा सा. Early dawn. It was early dawn. Okay, late night but early dawn. बहुत रात हो चुका था, तो एक नर्स बुलाने आई जूलियट को कि सोने का टाइम हो गया है, चलो. 18. What did the two lovers decide to do after their meeting ended? तो रात को जब उनका मीटिंग ख़त्म हुआ, तो मीटिंग ख़त्म होने के साथ साथ रोमियो एंड जूलियट डिसाइडेड टू डू समथिंग. व्हाट वाज दैट? गेट मैरिड एंड लीव वेरोना. तो शादी करके वेरोना से भाग जाएंगे. टेक परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स फॉर मैरिज. Juliet will take permission from her parents. Romeo will take permission from her parents, and then they wanted to get married with their permission. Or is it number C, appoint a time for their marriage? आपको कौन सा लगता है? एक देखिए, फर्स्ट थिंग तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. क्यों? बिकॉज कैपुलेट फैमिली एंड मोंटेग फैमिलीज दे आर आर्च राइवल्स. वो लोग एनिमीज हैं, एकदम आर्च एनिमीज हम लोग बोलते हैं, एकदम पक्का एनिमीज. ओके, दे आर ट्रू एनिमीज. वी से ट्रू फ्रेंड्स नो, बट दे आर ट्रू एनिमीज. ओके, दे आर नेवर गोइंग टू रिकॉन्साइल. वो लोग कभी जो है एक दूसरे के आस पास भी आने के लिए तैयार नहीं. दे आर नॉट रेडी टू इवन सी वन अनदर्स फेस. तो दिस ऑप्शन इज ऑब्वियसली एलिमिनेटेड, विल बी ऑब्वियसली एलिमिनेटेड. ये तो होगा ही नहीं, वो परमिशन लेने जाएंगे ही नहीं. गेट मैरिड एंड लीव वेरोना, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. वो शादी करके वेरोना को छोड़ देंगे, नहीं, ये भी नहीं. उन्होंने क्या किया कि अपॉइंट अ टाइम फॉर देयर मैरिज. उन्होंने सोचा कि लेट अस डिसाइड वन टाइम, लेट अस डिसाइड अ डे. ओके, लेट अस डिसाइड अ डे एंड टाइम एंड वी कैन मैरी. देन हम लोग उस टाइम पे मैरी करेंगे. ठीक है, सो अपॉइंट अ टाइम फॉर देयर मैरिज इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 19. हु कंडक्टेड द मैरिज बिटवीन द टू लवर्स. तो रोमियो और जूलियट का शादी किसने करवाया? हु कंडक्टेड द मैरिज बिटवीन रोमियो एंड जूलियट? इज इट फ्रायर लॉरेंस? इज इट लॉर्ड कैपुलेट? इज इट लॉर्ड मॉन्टेग? अभी दिस आंसर इज, ये तो आपको सोचना भी नहीं. यू नीड नॉट थिंक अबाउट दिस आंसर. लॉर्ड मॉन्टेग, लॉर्ड कैपुलेट तो हो ही नहीं सकता. दे विल नेवर अग्री, right? So the correct option is number A, Friar Lawrence. Okay, from a certain monastery, he conducted the marriage between the two lovers because he had a positive intention. He had a good intention that after the marriage between Romeo and Juliet, at least the two families, Montagues and Capulets, maybe it might happen that they will become friends again. He had a hope. Friar Lawrence को एक आशा था, एक होप था कि इन दोनों की शादी के बाद दोनों फैमिलीज जो है वो फिर से दोस्त बन जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं. ऊपर से चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता गया. यू नो, थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर देयर मैरिज. Anyways, number 20. Who were walking on the streets of Verona? So there are 20 questions. I said 19 actually, but there are 20 questions. Who were walking on the streets of Verona on one noon? तो वेरोना के रास्ते पे 3 लोग चल रहे थे एक्चुअली. चलो, मैंने आंसर भी ऑलरेडी बोल दिया. 3 लोग चल रहे थे वेरोना के रास्ते पे एक आफ्टरनून में, एक नून के टाइम पे. तो वो कौन 3 लोग थे? इज इट टिबल्ट, जूलियट एंड फ्रायर? इज इट रोमियो, बेनवोलियो, मर्कुशियो? इज इट लॉर्ड कैपुलेट एंड लॉर्ड मॉन्टेग? आपको कौन सा लगता है? अब मैंने 3 लोग कहा. आई टोल्ड यू 3 पीपल. सो आउट ऑफ द 3 पीपल, लॉर्ड मॉन्टेग एंड लॉर्ड कैपुलेट तो इनकरेक्ट आंसर. दे आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दे आर एनिमीज. एनिमीज कैन नॉट बी टुगेदर. Tybalt, Juliet and Friar is also incorrect. The correct answer is Romeo, Benvolio and Mercutio. तीनों जा रहे थे रास्ते से. Okay, and opposite से आ रहा था कौन? That we will learn in set 6. So these are the answers that you have. So you can write down the correct answers or tick mark whichever you feel is correct. But I would suggest you that you write it down, because otherwise, you see, before your exams, it will be too time consuming if you go on watching the video before exams. Okay, exams are very near. Alright, and I'll try to complete all the English lessons as fast as possible. Okay, so that's all from me. I hope these MCQs will help you. I'm going to bring more MCQs for you every alternate days. So subscribe to the channel, like and share my videos, invite your friends, tell them to like, share and subscribe to the channel. And also you can find me on Facebook. I'm there on Facebook also, Omni Gyan channel. Okay, so that's all, with love from Omni Gyan, and all the best to all of you.